चेयर पीछे लगवानी पड़ेगी, आप चेयर चेयर लगो। मैं कुछ नहीं कह रहा था। Ladies and gentlemen, the parade you see in front of you consists of 4 armed platoons and 4 unarmed platoons. The platoons are commanded by officers of Long Gunnery Indian Corps. Commander Bipin Krishna, training coordinator, has the honor and proud privilege of commanding the ceremonial parade this evening. देवियों और सज्जनों, आज की परेड में आपके समक्ष 4 सशस्त्र एवं 4 निःशस्त्र नौसैनिक टुकड़ियां खड़ी हैं। सभी टुकड़ियों का नेतृत्व लॉन्ग गनरी इंडियन कोर्स के अधिकारी कर रहे हैं। आज की इस अनुष्ठानिक परेड का नियंत्रण का सौभाग्य भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य के ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर कमांडर बिपिन कृष्णा को प्राप्त हुआ है। In the Navy, the parade signifies discipline, intense coordination, teamwork, and a sense of pride. The word parade comes from the old tradition of formation combat, in which soldiers were held in strict formation so as to maximize their combat effectiveness. Although modern warfare has evolved from closely held formations to rapidly mobile battle groups, the modern military organizations still use the parade for ceremonial purposes and to showcase drill, discipline, and precision. A display of these key attributes of drill is clearly seen when a ceremonial guard is paraded by a military unit. INS Dronacharya has the honor to parade a 150-men ceremonial guard in honor of the Supreme Commander today. In a few moments from now, you will witness the 150-men Guard of Honor march in with the naval band playing Indian Fleet. देवियों और सज्जनों, आपसे कुछ ही क्षणों में आप नौसेना बैंड द्वारा वादित इंडिया कूच करते 150 नौसैनिकों के सम्मान गार्ड को देखेंगे। Ladies and gentlemen, the President's Guard of Honor of Indian Naval Ship Dronacharya marching in with full josh and great pride. देवियों और सज्जनों, अब आपके समक्ष प्रस्तुत है राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड का अद्भुत पदार्पण।
Our men are now formed up for the color ceremony, and we now await the arrival of the commanding officer, Indian naval ship Dronacharya, Commodore V.Z. Job. Commodore V.Z. Job assumed command of INS Dronacharya on 1st of March 2021. He was commissioned on 1st January 1995 into the executive branch of the Indian Navy. He is a gunnery and missile warfare specialist, and during his career, he has commanded 4 ships, including Indian naval ships Kulish and cadet training ship Tir as senior officer, 1st Training Squadron. He has commanded Mauritius Coast Guard ship Guardian and has served as Chief Staff Officer Operations of the Mauritius Coast Guard while on deputation. देवियों और सज्जनों, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य के भूतपूर्व कमान अधिकारीगण भी उपस्थित हैं। इन्होंने विभिन्न कालावधियों में इस प्रतिष्ठान का कुशल प्रगति में निस्वार्थ योगदान दिया है। May we also take this opportunity to acknowledge all former commanding officers of INS Dronacharya who are present with us today, who have, during their respective tenures, taken the unit to greater and greater heights. Ladies and gentlemen, as we await the arrival of the dignitaries, allow us to take you back in time and go through the journey of INS Dronacharya. After the Second World War, the Royal Indian Navy felt the necessity for expansion of facilities for gunnery training, following which training commenced in 1939 at Naval Dockyard, Bombay. Institutionalized gunnery training commenced with the setting up of Gunnery School at an independent location at 3 Palazzo, Malabar Hill, Bombay on 1st of June 1942. And 500 to 600 sailors were under training by the end of the year. A suitable site was finally found at Manora Sandpit, Karachi for establishing the Gunnery School, which was commissioned as HMIS Himalaya in January 1943. Training was shifted on 26 November 1943
to HMIS Himalaya, considered the most modern naval gunnery school of its type in existence outside the British Isles. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉयल इंडियन नेवी को तोप प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता महसूस हुई। अतः सन 1939 में नेवल डॉकयार्ड बॉम्बे में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। 1 जून सन 1942 को 3 पलाजो मालाबार हिल में एक स्वतंत्र स्थान पर गनरी स्कूल की स्थापना के साथ संस्थागत गनरी प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ और सर 1942 के अंत तक 500 से 600 नौसैनिक प्रशिक्षणाधीन थे। अंततः गनरी स्कूल की प्रतिस्थापना हेतु कराची के मनोरा सैंडपिट में एक उचित स्थान मिला, जिसे जनवरी सन 1943 में HMIS हिमालय के नाम से कमीशन किया गया। 26 नवंबर सन 1943 में HMIS हिमालय के उद्घाटन पश्चात प्रशिक्षण को यहाँ स्थानांतरित किया गया। यह ब्रिटिश द्वीपों के बाहर स्थापित अपने स्तर का अत्याधुनिकतम नौसेना तोपची स्कूल था। When India gained independence, HMIS Himalaya was allocated to Pakistan, and subsequently in October 1948, basic gunnery training facilities were established at Naval Base Kochi. Advanced gunnery training course was introduced in the year 1954, followed by the specialist course for gunnery instructor in 1957 and Indian long gunnery course in 1958. In March 1978, the gunnery school was shifted to be co-located with Coastal Battery and Naval Coast Battery at Fort Kochi and was commissioned as INS Venduruthi II on 8th of March 1978. The institution was renamed as INS Dronacharya on the 27th of November 1978 by the then Governor of Kerala, Srimati Jyoti Venkatachalam. भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने पर HMIS हिमालय को पाकिस्तान को आवंटित किया गया और बाद में अक्टूबर सन 1948 में नौसेना बेस कोच्चि में बुनियादी तोपची प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित की गईं। वर्ष 1954 में उन्नत गनरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया और सन 1957 एवं 58 में क्रमशः गनरी इंस्ट्रक्टर विशेषज्ञ पाठ्यक्रम और इंडियन लॉन्ग गनरी कोर्स प्रारंभ किए गए। मार्च सन 1978 में गनरी स्कूल को फोर्ट कोची के तटीय बैटरी और नेवल कोस्ट बैटरी में स्थानांतरित कर सह स्थापित किया गया और इसे 8 मार्च सन 1978 को भारतीय नौसेना पोत वेंडुरुथी द्वितीय के रूप में कमीशन किया गया। 27 नवंबर सन 1978 को केरला की तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती ज्योति वेंकटाचलम द्वारा संस्थान का पुनः नामकरण भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य किया गया। परेड अब वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, ध्वजाधिकारी दक्षिणी नौसेना कमान के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। Vice Admiral M.A. Humpy Holi is an alumnus of the National Defence Academy, Khadakwasla, and was commissioned on 1st July 1985. An anti-submarine warfare specialist, the Admiral has commanded 3 Indian naval ships, Talwar, Magar and Nashak. As a flag officer, the Admiral has held important appointments as the Assistant Chief of Personnel, Human Resources Development at Naval Headquarters, Flag Officer Sea Training, Flag Officer Commanding Western Fleet, and the Director General, Naval Operations. Prior assuming charge as Flag Officer Commanding-in-Chief, Southern Naval Command on 30th November 2021, he served as the Commandant, Indian Naval Academy, Edimala. Vice Admiral M.A. Humpy Holi
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 1 जुलाई सन 1985 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त हुआ। एक पनडुब्बी रोधी विशेषज्ञ एडमिरल ने 3 जहाज़ों की कमान संभाली। वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली ने 30 नवंबर सन 2021 को दक्षिणी नौसेना कमान के ध्वजाधिकारी के रूप में कमान संभाली। परेड अब नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R. हरि कुमार परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ADC के आगमन की प्रतीक्षा में है। Admiral R. Hari Kumar took over as the Chief of the Naval Staff on 30th November 2021. He was commissioned into the Indian Navy on 1st of January 1983. The Admiral is a gunnery and missile warfare specialist and has commanded Coast Guard ship Charlie 01, Indian naval ships Nishank, Kora, Ranveer and Virat. His flag appointments include Commandant Naval War College Goa, Flag Officer Sea Training, Flag Officer Commanding Western Fleet, Chief of Staff Western Naval Command, Chief of Personnel and Flag Officer Commanding in Chief Western Naval Command. The Nishan is a symbol embodying the spirit of the people who fight under it. A commissioned unit ashore that is awarded the President's color or the Nishan considers it the highest honor that the Supreme Commander, the President of India, bestows on it. Once the Nishan is awarded by the Honorable President and inserted into the Guard of Honor in front of you, the Guard of Honor will then be addressed as the Nishan Guard. The design of the President's color has three main constituents. The national flag in the upper left canton adjacent to the staff, the state emblem
on the upper right canton on the fly side with a navy blue gold octagon below it. The octagon has twin golden octagonal borders encompassing the Navy's crest and the motto of the Indian Navy, Shamno Varuna, inscribed in golden Devanagari script. The golden state emblem signifies power, courage, confidence, and pride, whilst the navy blue golden octagon draws inspiration from Shivaji Maharaj Rajmundra and represents the 8 directions, symbolizing the Indian Navy's maritime outreach. Dear spectators, the award of President's Color is the highest honor bestowed upon a military unit in recognition of its exceptional service to the nation, both during war and in peace. The concept of carrying colors, standards, or guidance in military organizations is believed to have originated in ancient Egypt. This was done to mark the location of the commander and to act as a rallying point for the troops. In the Middle Ages, European armies emblazoned their standards with the commander's coat of arms. In modern times, these colors or standards are mostly used on ceremonial occasions and are displayed during formal parade. माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त निशान के सम्मान गार्ड में सम्मिलित होने के पश्चात इसे निशान गार्ड कहकर संबोधित किया जाएगा। राष्ट्रपति निशान के 3 मुख्य भाग हैं। ऊपरी बाएं कोने में राष्ट्रीय ध्वज, ऊपरी दाहिने कोने में भारत का राज चिन्ह और उसके नीचे नीला स्वर्णिम अष्टकोण। भारतीय नौसेना के अष्टकोणीय क्रेस्ट पर स्वर्णिम देवनागरी लिपि में अंकित है शम नो वरुणः। जहां एक ओर भारत का राज चिन्ह भारतीय नौसेना की वीरता, शौर्य, आत्मविश्वास और गर्व को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित स्वर्णिम अष्टकोण 8 दिशाओं में भारत के बढ़ते वर्चस्व का प्रतीक है। राष्ट्रपति का निशान युद्ध अथवा शांति काल में किसी भी चल अचल सैन्य गठन को उनकी असाधारण राष्ट्र सेवा हेतु प्रदत्त महानतम सम्मानों में से एक है। सैन्य संगठनों में ध्वज के प्रयोग की संकल्पना प्राचीन मिस्र से उद्भूत मानी जाती है। इसे सेनापति का स्थान चिन्हित करने एवं सैन्य दल के एकत्रण हेतु उपयोग किया जाता रहा है। आधुनिक काल में ध्वज प्रायः आधिकारिक समारोहों और औपचारिक परेड में प्रदर्शित किए जाते हैं। भारतीय नौसेना में निशान एक निशान अधिकारी द्वारा वहन किया जाता है। देवियों और सज्जनों, केरला के माननीय मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन समारोह में पधार चुके हैं। Ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, has arrived at the venue. परेड अब केरला के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। Shri Arif Muhammad Khan was born on 18th November 1951 in Bulandshahr, Uttar Pradesh. He was educated at Jamia Millia School, Delhi, Aligarh Muslim University, Aligarh, and at Shia College, Lucknow University. Shri Arif Muhammad Khan started his political career as a student leader.
He contested the first Legislative Assembly election from Siana constituency of Bulandshahr. He is an avid reader and also an author of the best-selling book of the year 2010, Text and Context, Quran and Contemporary Challenges. Shri Arif Muhammad Khan was appointed the Governor of Kerala on 1st of September 2019. Ladies and gentlemen, we now await the arrival of the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. The Honorable Rashtrapati will be received with 21 gun salutes. The practice of firing of 21 gun salutes dates back several hundred years and indicates a rich martial tradition. It is the highest honor accorded to the most honorable member of the Union of India, the President of India. All spectators are requested to rise on the arrival of the Honorable President. Please note that Rashtra salute will be accorded to the President with the national anthem played by the band. देवियों और सज्जनों, अब से कुछ ही क्षणों में भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया इस समारोह में पधारेंगी। राष्ट्रपति महोदया के स्वागत में उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 21 तोपों की सलामी एक बहुमूल्य प्राचीन सैन्य परंपरा है। यह सर्वोच्च सम्मान भारतीय गणराज्य के सबसे माननीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है। सभी आगंतुकों से सविनय निवेदन है कि वे माननीय राष्ट्रपति के आगमन पर और उन्हें राष्ट्रीय सलामी दिए जाने पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
Ladies and gentlemen, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, has arrived at the venue. देवियों और सज्जनों, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गई हैं। उनके अनुरक्षण हेतु उनके परिसहायक सब लेफ्टिनेंट रॉयल कोहर्ड और सब लेफ्टिनेंट अभिषेक मान हैं। The Honorable President of India is being escorted by Sub-Lieutenant Royal Kohard and Sub-Lieutenant Abhishek Man. सभी अतिथियों से आग्रह है कि कृपया अपने आसन ग्रहण करें। Ladies and gentlemen, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, accompanied by Admiral R. Hari Kumar, Chief of the Naval Staff, and the Parade Commander, Commander Bipin Krishna, will now review the Guard of Honor. देवियों और सज्जनों, भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और परेड कमांडर कमांडर बिपिन कृष्णा के साथ अब गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगी। In honor of the President of India, standing proudly before you today on parade are 400 personnel of INS Dronacharya,
At the helm of the 150 men honor guard is Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia as Officer of the Guard 1 and Lieutenant Commander Sumit Deorari to his left as Officer of the Guard 2. On the right side of the guard, we have 36 members of the INS Dronacharya band, and the music is being conducted by T. Vijay Raj, Master Chief Petty Officer, musician, first class. राष्ट्रपति जी के सम्मान में भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य के 400 वीर नौसैनिक आज परेड में आपके समक्ष गर्व से खड़े हैं। 150 जवानों के सम्मान गार्ड के शीर्ष पर लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल अहलूवालिया गार्ड 1 के अधिकारी के रूप में और लेफ्टिनेंट कमांडर सुमित देवराड़ी गार्ड 2 के अधिकारी के रूप में उनकी बाईं ओर हैं। In a few minutes from now, we will witness the commencement of President's Colors ceremony with the insertion of drum toli for the pile of drums ceremony. देवियों एवं सज्जनों, अब से कुछ ही क्षणों में हम पाइल ऑफ ड्रम समारोह के लिए ड्रम टोली की प्रविष्टि के साथ राष्ट्रपति निशान समारोह का प्रारंभ होते देखेंगे।
pile of drums ceremony is also known as the drumhead service. It traces its origin back to a time when soldiers on the field used to arrange their drums in a pile to form an altar. Clergymen would then conduct religious services on this pile of drums to pray for victory in battle. पाइल ऑफ ड्रम समारोह को ड्रम हेड सर्विस के रूप में भी जाना जाता है। पारंपरिक रूप से सैनिक अपनी ढोलकों की टोली को व्यवस्थित ढंग से रखकर एक वेदिका बना लिया करते थे। इस वेदिका के ऊपर पुरोहितवर अपनी धार्मिक रीति से युद्ध में जीत के लिए प्रार्थना एवं धार्मिक सेवाओं का आयोजन करते थे। देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने निशान धारक प्रीतम सिंह, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, तोपची प्रशिक्षक प्रथम श्रेणी, निशान लेकर आ रहे हैं और कुछ ही क्षणों में निशान लेफ्टिनेंट कमांडर कर्ण कौशल राष्ट्रपति के निशान का निरावरण करेंगे। Hand spun from the finest Indian silk, the President's colour is carried on a 7 feet long staff made of seasoned ashwood. Adorning the top of the colour is 7-inch gold-plated national emblem of the Republic of India. राष्ट्रपति निशान को श्रेष्ठतम भारतीय रेशम के धागों से बनाया जाता है और इसे पक्की प्रभूर्ज वृक्ष की लकड़ी से बने 7 फीट लंबे मानक पर बांधा जाता है। इस निशान के ऊपरी भाग 4 स्वर्णिम सुनहों से बना है, जिसमें अंकित राष्ट्रीय चिन्ह गणतंत्र भारत का प्रतीक है। देवियों और सज्जनों, अब आपके समक्ष सर्वधर्म समारोह की प्रस्तुति की जाएगी। इसके अंतर्गत 4 मुख्य धर्म सनातन, इस्लाम, सिख एवं ईसाई धर्म के धार्मिक प्रतिनिधि, सूबेदार धर्म शिक्षक H.K. तिवारी, सूबेदार धर्म शिक्षक M.N. खान, सूबेदार धर्म शिक्षक मेजर सिंह एवं सूबेदार धर्म शिक्षक P.G. लाला निशान के लिए प्रार्थना करेंगे। All personnel in uniform are requested to remain seated and remove their headgear on the command parade topi utar. हरि ओम स्वस्ति न इंदो विधसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तायिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति
स्वस्तिनः बृहस्पतिर्दधातु पिखदश्वामरुतः पिशिनि मातरः शुभं यावानो विदधे कुजग्मय अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्ये। भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा आज भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य को निशान प्रदान किया जा रहा है। ऐसे सुंदर सुखद शुभ अवसर पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य सदैव खुशहाल रहे, उन्नत प्रगति की ओर अग्रसर हो, इनकी मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो, ये और इनका परिवार सुख शांति और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, किसी को किसी प्रकार का कष्ट क्लेश द्वेष न हो, यही परमपिता परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। ओम द्यः शांति अंतरिक्षगं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पतयः शांति सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयंकुर शन्नः कुर्पजाभ्यो भयन्नः पशुभ्य। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवन्तु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह, आज इस मुबारक मौके पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा INS द्रोणाचार्य को निशान प्रदान किया जा रहा है। इस मुबारक मौके पर आपसे दुआ करते हैं कि आप अपनी रहमत और अपना करम INS द्रोणाचार्य और INS द्रोणाचार्य के तमाम अफसर साहिबान, तमाम नौसैनिकों को पर अपनी खुसूसी रहमत नाजिल अता फरमा। ऐ अल्लाह, इनको जंग के मैदान में, ट्रेनिंग के मैदान में, खेल के मैदान में हर जगह फ़तह और कामयाबी हासिल अता फरमा। आने वाली तमाम परेशानियों और मुसीबतों से इनकी हिफाजत फरमा। इनके घर वालों के ऊपर अपनी खुसूसी रहमत नाजिल अता फरमा और साथ ही साथ हमारे मुल्क के ऊपर अपनी खुसूसी रहमत नाजिल अता फरमा। हमारे मुल्क में अमन और खुशी अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब की दुआओं को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुखदाता पै पंजनो दिस आगे करे अरदास मेहर करे जिस मेहरबान ता कारज आवे रास आपे जाने करे आप आपे आने रास दिसे अगे नानका कल गए कीचे अरदास। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ, आप जी नूं हाज़र जानदा होया अरदास बेनती है जी, अज भारत के मानयोग राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य नूं आप जी की कृपा नाल निशान प्रदान किए जा रहे हैं। इस शुभ अवसर उत्ते आप दे सेवकां ने आप जी दे चरण कमल परसे हैं। आप दे सेवकां दे समूह कारज रास करने जी, सदा चढ़दियां कलां बख्शिश करनियां, अंग संग होके सहायता करनी,
ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। देश शिवा पर बोए शुभ कर्म ते कभू ना डरो अरि सो जब जाए लरो निश्चय करे अपनी जीत करो और सिखो अपने ही मन को एलाल जिहो गुण तो उचरो जवाब की औद निदान बने अतगीरण में तब जूझ मरो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। The Lord has done great things for us. We are glad. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace, both now and forever. Amen. दर्शकों, अब भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य की ओर से निशान अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक जॉर्ज स्करिया माननीय राष्ट्रपति से निशान ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। Ladies and gentlemen, Nishan Adhikari Lieutenant Commander Deepak George Skaria will receive the President's Standard on behalf of INS Dronacharya. Ladies and gentlemen, this is the moment we've all been eagerly waiting for and looking forward to. This prestigious moment will go down in the history of Indian naval ship Dronacharya and the Indian Navy as a red letter day and will remain etched in our memories for a long time to come.
देवियों और सज्जनों, अब राष्ट्रपति निशान को राष्ट्रीय सलूट प्रदान किया जाएगा। अतः सभी से निवेदन है कि इसके सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी कार्मिक सलूट करें। Ladies and gentlemen, you may now resume your seats. And here they come marching in. The personnel in charge of the pile of drums are now marching in to collect their drums. For any unit of the armed forces, color is the symbol of its tradition, pride, valor, and bravery. On the 27th of May 1951, Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, conferred the Indian Navy with President's color. You will be glad to know that the Indian Navy was the first to be conferred with the President's color amongst the three armed forces. सशस्त्र सेनाओं की किसी भी इकाई के लिए यह निशान उसकी परंपरा, गौरव, वीरता और शौर्य का प्रतीक होता है। आप सभी को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच राष्ट्रपति के निशान से सम्मानित होने वाली सर्वप्रथम सेना भारतीय नौसेना थी। Colors have long been associated with religion and spiritual practices.
These associations linking religion with the battle flag are still attached with colors even today. The pile of drums ceremony ending with our drummers marching off to the tune of Sagar Pavan, composed by Commander V.C. De Cruz. प्राचीन काल से निशान का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व रहा है। धर्म व युद्ध निशान का यह समागम आज के युग में भी प्रासंगिक है। Ladies and gentlemen, the parade will now march past the dais and salute the Honorable President. During the march past, you are requested to rise as the President's color passes in front of you. All personnel in uniform are requested to salute. देवियों और सज्जनों, परेड अब मंच से गुजरेगी और माननीय राष्ट्रपति जी को सलामी देगी। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि मार्च पास्ट के दौरान जैसे ही आपके सामने राष्ट्रपति का निशान गुजरता है, कृपया आप इसके सम्मान में खड़े हो जाएं। वर्दी में उपस्थित सभी कार्मिक सलामी दें। The parade is now marching, keeping in step with the tunes of Sare Jahan Se Acha. देवियों और सज्जनों, अब आप देख सकते हैं कि परेड कमांडर बिपिन कृष्णा राष्ट्रपति जी को सलामी दे रहे हैं। Ladies and gentlemen, the parade Commander Bipin Krishna, marching past the saluting dais. 150 जवानों के शीर्ष पर लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल अहलुवालिया गार्ड 1 के अधिकारी के रूप में राष्ट्रपति को सलामी देते हुए। राष्ट्रपति निशान को गर्व से धारण किए हैं लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक जॉर्ज कार्या। दर्शकों, लेफ्टिनेंट कमांडर सुमित देवराड़ी की अगुवाई में निशान गार्ड 2 सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। Ladies and gentlemen, the first platoon is being led by Lieutenant Commander Aditya Vashisht. कदम से कदम मिलाते हुए प्लाटून नंबर 2 का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर हर्षित पांडे। Proudly leading the 3rd platoon, marching to the tunes of Kadam Kadam Badhaye Ja, Lieutenant Commander Ashish Bhadwal. लेफ्टिनेंट कमांडर अनमोल भाटिया के नेतृत्व में 4थी प्लाटून सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। Ladies and gentlemen, leading the 5th platoon, Lieutenant Commander Anirudh Dikshit, and marching past the saluting dais.
लेफ्टिनेंट कमांडर अन्वय भगत की अगुवाई में हमारी समुद्री सीमा की रक्षा करने का प्रण लिए प्लाटून नंबर 6। And now approaching the saluting days, platoon number 7, led by platoon commander, Lieutenant Commander Chintan. वीर बहादुर नौसैनिकों की प्लाटून नंबर 8 की कमान संभाली है लेफ्टिनेंट कमांडर यशपाल ने। गर्व से चलते हुए, सफेद रंग में चमकते हुए मार्चिंग दल अपनी बाहों को लहराते हैं, अपनी एड़ियों पर जोर देते हैं और अपना सिर ऊंचा रखते हैं। The Indian Naval Band marching past the saluting days and playing the anthem of the Indian Navy, Jai Bharati. Marching with pride, shining in white, the marching contingents swing their arms, dig their heels, and hold their heads high with pride. नौसेना में परेड अनुशासन, गहन समन्वय और गर्व का प्रतीक है। परेड शब्द युद्ध गठन की प्राचीन शैली से उद्धृत है, जिसमें सैनिकों का युद्ध कौशल बढ़ाने हेतु उन्हें संगठित रखा जाता था। यद्यपि आधुनिक युद्ध संगठित संरचनाओं से गतिमान युद्ध समूहों में विकसित हो गया है, आधुनिक सैन्य संगठन अभी भी औपचारिक उद्देश्यों के लिए परेड का उपयोग करते हैं और ड्रिल, अनुशासन और सटीकता का प्रदर्शन करते हैं। Ladies and gentlemen, the Honorable President of India will now address the parade. देवियों और सज्जनों, राष्ट्रपति महोदया अब परेड को संबोधित करेंगी। Governor of Kerala, Sri Arif Muhammad Khan Sahib, Chief Minister Sri Pinarayi Vijayan ji, Chief of Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, officers on parade, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am glad that my first visit to Kerala as President of India has brought me to Kochi to award the President's Color to INS Dronacharya, a premier gunnery training established of the Indian Navy. As the Supreme Commander of Armed Forces, I am happy to present the President's Color to INS Dronacharya in recognition of the exceptional service rendered to the nation both in war and peace. I congratulate all personnel for their impressive turnout and well-coordinated drill today. This is a reflection of the high standards of training being imparted to you all. I am delighted to note that this event coincides with the school completing its
80 years of dedicated service to the nation. This institute is a training establishment of international repute and a center for excellence in granary and missile welfare. I am happy to note that personnel from paramilitary and police forces have also been trained as INS Dronacharya. In addition, the institute had fostered India's vision for a secure maritime region by training officers and sailors of our friendly countries as well. I congratulate the alumni and past and present personnel who have served or trained in the institution for their hard work and dedication. I am told that the current Chief of Naval Staff, Admiral Hari Kumar, is also a distinguished alumnus of this school. Ladies and gentlemen, this is my second visit to the Navy establishment as the President of India. I had the honor of attending the Navy Day celebration at Visakhapatnam with our brave Navy personnel. I also witnessed the operational demonstration of the Indian Navy. It demonstrated Navy's preparedness to meet any challenge and also its focus on training and operational excellence. Today, in the Southern Naval Command, I also had a glimpse of the spirit of demand, defend and nation against all threats and protect our maritime interest. Before coming here, I also had an opportunity to visit INS Vikrant and interact with the officers and sailors on board. The indigenously built modern aircraft carrier is a shining example of Atmanirbhar Bharat. Today, India is among select few nations with a capacity of building an aircraft carrier with indigenous technology. I congratulate the entire team of Indian Navy, Cochin Shipyards Limited, and everyone associated in the journey of INS Vikrant. I am proud of the brave men and women of the Indian Navy for serving the nation with distinction and dedication. Ladies and gentlemen, India has a rich maritime history. The maritime strength remains critical to India's strategic, military, economic, and commercial interest. For a nation like India, the fifth largest economy in the world with a long coastline, island territories, and substantial seafaring population, have a strong and modern navy is a very high importance for the last 75 years. A combat-ready, multidimensional, and versatile Indian Navy has not only deterred our adversaries and safeguarded our maritime interests, but also enabled creation of a peaceful periphery to facilitate socio-economic growth. The nation is proud of the Indian Navy's commitment in protecting our maritime borders, securing our trade routes, and rendering assistance during calamities. Over the years, the Navy has developed significant capabilities to be a mission deployed and response-ready force across the Indian Ocean region and be the first responder to any contingency in our maritime neighborhood. The country therefore looks up to the Navy to protect our maritime interests, our women and men in whites, and would need to keep themselves updated with the latest technology advancement as well as changing operational dynamics in maritime domain. In the end, I wish the officers and the crew of INS Dronacharya success in future endeavor. My best wishes to all of you and your families. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. I now request Srimati Manju Pillai, Chief Postmaster General of Kerala Circle, to come on to the podium to introduce the special cover.
Her Excellency, Honorable President of India, His Excellency, Honorable Governor of Kerala, Honorable Chief Minister of Kerala, respected Chief of Naval Staff, respected Commander-in-Chief, Southern Naval Command, and all the distinguished dignitaries present in this august forum. It is my privilege to present the special cover of the President's Color to INS Dronacharya. Today, 16th of March 2023, is indeed a momentous occasion for INS Dronacharya. The presentation of the President's Color is testimony to the valor and dedication of the Indian Navy. It is a tribute to the nationalistic spirit of sacrifice and security that embodies the core of the Indian Navy. INS Dronacharya, the premier gunnery training institute, has distinguished itself over the decades, earning its distinction with these very traits. It also has an illumined alumni that does the institution proud. The Department of Post, Ministry of Communications, is indeed honored to be part of this momentous occasion and bring out a special cover to be released by Her Excellency, President of India. This is a day which will be etched in the history of INS Dronacharya. The special cover will have great philatelic value and will be treasured by philatelists world over. Thank you. Jai Hind. May I request the Commanding Officer, INS Dronacharya, the Flag Officer, Commanding-in-Chief, Southern Naval Command, the Chief Postmaster General, Kerala Circle, the Chief of the Naval Staff, Honorable Chief Minister of Kerala, and Honorable Governor of Kerala to kindly proceed to the parade ground for release of the special cover by the Honorable President. May I request the Honorable President, Srimati Draupadi Murmu, to please come on to the parade ground to release the special cover. Now, Admiral R. Harikumar, Chief of the Naval Staff, will present mementos to the Honorable President, the Honorable Governor of Kerala, and the Honorable Chief Minister of Kerala. The memento has a statue of Guru Dronacharya, who is in the posture of Lakshya-bhed, representation of INS Dronacharya's singular focus to train officers and sailors to effectively deliver ordnance on target. I request Admiral R. Harikumar to present the memento to the Honorable President, Srimati Draupadi Murmu. I request Admiral R. Harikumar to present the memento to the Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Muhammad Khan.
And now, may I request the Admiral to present the memento to the Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan. देवियों और सज्जनों, समीक्षा आदेश में बैंड राष्ट्रगान की धुन बजाएगा और राष्ट्रपति जी को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। सभी आगंतुकों से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं।